Yes, friend. Good morning. Today we discuss the magnetic effect of current. Magnetic effect of current. देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये हमारे पास यूनिट थर्ड आती है। हम यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं विद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स एवरीथिंग। Now today we are going to start magnetic effect of current। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा जो पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetisms due to electric current and moving charge। इलेक्ट्रिक करंट एंड मूविंग चार्ज क्या बना? ये आपके पास ब्रांच किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज ये आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जो इफेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का और मूविंग चार्ज का, उसके बाद ओरेस्टेड आता है। ओरेस्टेड डिस्कवरी give a relations between electricity and magnetism। It gives the relation between electricity and magnetism in 1820। According to Oersted, when we place a magnet needle, this one is the magnetic needle, below a current carrying wire, this current carrying wire, you are seeing that this one is the source of supply, one way key, and current is flowing. Then according to Oersted, when the current is flow B to A, then this pole deflected towards B point and this pole is deflected towards N. And there is the deflections in the magnetic needle which show that a current carrying conductor या current carrying wire produce a magnetic field around it। This is the main point of the Oersted। A current carrying wire conductor produce a magnetic field around it by showing the deflection of the needle। And when we reverse the polarity means now this one has positive polarity, this one has negative polarity। Now current is flowing from A to B। When current is flowing A to B, then what will be happens? Then south pole, north pole towards B, north poles towards B। ओके, उसमें क्या था? साउथ पोल टुवर्ड्स B, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स A। अब इसमें ये आपके पास B जो है ये आपके पास किसकी तरफ जाएगा? अब ये नॉर्थ पोल B की तरफ, यानी कि अब ये सिचुएशन रिवर्स, दिस वन इज दिस, ये वो। उसमें सिचुएशन क्या थी? व्हेन करंट B to A, साउथ पोल, ये सिचुएशन थी।
upwards or north downwards, or the polarity is now in this polarity. This pole is this and this pole is this. Any polarity deflections of the needle is changed. I mean say that the deflection of the needle is changed by reversing the directions, which show that a current carrying conductor produce the magnetic field around it. It's okay. Now Oersted discovered the magnetic field, and according to Oersted, a current carrying conductor produce magnetic field around it. And according to Oersted, the first point is that if a magnet is at rest, it produces the magnetic field. And when a charge, electric charge at rest, it produces the electric field. This is the first point of the Oersted. The magnetic field is produced by the magnet. Yeah, when a magnet is rest, when a magnet is at rest, it produces magnetic field around it and around it. And when a charge is, when an electric charge is at rest, it produces electric field. It produces electric field around it. This is the main point of the Oersted experiment. When a magnet is at rest, it produces the magnetic field around it, and when an electric charge at rest, it produces the electric field around it. Second point is what? By the Oersted, a current carrying conductor produce magnetic field around it, but not electric field. Electric field. A current carrying जो conductor है, that produce the magnetic field around it, but not electric field. Otherwise, other hand, we can say a moving charge with a uniform velocity can produce electric field as well as magnetic field. The most important point. Pehla point is what? By the Oersted, when a current carrying conductor produce the magnetic field, ये मैं आपको बता चुका हूँ. Oersted का मेन यही था, he discovered the magnetic field around a current carrying conductor. But he says when a magnet is at rest, it produces the magnetic field around it. When an electric charge at rest, it produces electric field around it.
A current carrying conductor produces the magnetic field around it, but not electric field. Other hand, we can say a moving charge with uniform velocity can produce electric field as well as magnetic field. ये आपका सेकंड पॉइंट था ओरेस्टेड का. Third point is that no pole is shown by a current carrying wire. Current carrying coil. कि वो पोल शो नहीं करेगी, बट इट इंडिकेट द पोलरिटीज. वो नॉर्थ और साउथ पोल को शो नहीं करेगी, बट पोलरिटीज शो करेगी. पोलरिटीज. इट्स ओके. ये according to Oersted. The third most important point, no pole means north and south pole. We can't say a current carrying coil के लिए कि that is the north pole and that is the south pole, but वो pole नहीं बनाएगी, but polarity show करेगी, but they show the polarity. Yes. Now directions of magnetic field. Direction of magnetic field is given by first right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल में मेनली 2 पॉइंट आते हैं. एक होता है स्ट्रेट करंट. वन इज सर्कुलर करंट. द राइट हैंड, दिस वन इज थंब, दिस वन इज कर्ल ऑफ फिंगर. If we can carrying a wire, straight wire, current I, thumb of right hand, directions of current, and curled finger represents directions of field lines, magnetic field lines. जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज. एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम magnetic field lines, they start from north pole at south pole outside or inside south to north. और magnetic field lines form is closed loop. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोज लूप बनाती है. सेम प्रॉपर्टी है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम एज टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट्स that represent the direction of magnetic field. वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने पढ़ा था टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सेम एज यहाँ पे टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर. उसमें पढ़ा था टू इलेक्ट्रिक लाइंस व्हेन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड, क्लोजनेस शो करेगी, दैट मीन्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड.
यहाँ पे when two magnetic field lines or more and more magnetic field lines are crowded, they show the what they show strong magnetic field. Or when they are apart to each other, when the field lines are apart to each other, that indicate a weak magnetic field. Same as उसमें हमने पढ़ा when electric field lines are equidistant, they strong from the uniform electric field. यहाँ पे same as when magnetic field lines are equidistant state, equidistant, they show the uniform magnetic field. और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमने पढ़ा, ये आपके पास है, दिस वन इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मीन सेम. देयर ड्रॉ के लिए वहां पे चार्जेस रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए नॉर्थ एंड साउथ पोल रोल प्ले करते हैं. हमारा था राइट हैंड थंब रूल. ये राइट हैंड है. स्ट्रेट करंट में करंट मान लीजिए, ये करंट थंब करंट अपवर्ड्स, फील्ड लाइंस जो मूव कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में. तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज. व्हेन द करंट इज स्ट्रेट, व्हेन द करंट इज सर्कुलर, दिस वन इज द सर्कुलर. Now there is two condition. Either current is in this situation anti-clockwise. तो सर्कुलर करंट के केस में जो थंब है दैट रिप्रेजेंट, थंब रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे थंब दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शंस ऑफ फील्ड लाइंस, और कर्ल फिंगर represent directions of current. वाइस वर्सा है स्टेट करंट में और सर्कुलर करंट में. स्टेट करंट एनी वायर, कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट स्टेट. थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द फील्ड लाइंस. करंट अपवर्ड्स है, फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज. वी कैन ड्रॉ. इन केस ऑफ सर्कुलर करंट में, दिस वन इज द सर्कुलर करंट. Field lines, now here current is anti-clockwise directions. Current is anti-clockwise. तो current is anti-clockwise directions है. This one is anti-clockwise. And field what? ये current है anti-clockwise, field is outwards. Okay. और outwards जो magnetic field होगा, that is represented by the dot. Dot means what? Magnetic fields perpendicular to plane of paper in outward direction. Dot outwards. एक होता है cross inwards when the field is perpendicular into plane of paper inwards, और dot होता है outwards. So that's it. When the current is anti-clockwise, ACW, anti-clockwise. If the current is, we can take, if the current is clockwise. अब देखिए आप क्लॉकवाइज है ये. अब आपका जो अंगूठा है थंब है वो इनवर्स है, या इनवर्स. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो क्रॉस मींस इनवर्स. इसको आप बोलेंगे CW, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. तो सर्कुलर करंट में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. यदि करंट इज सर्कुलर, व्हेन द करंट इज सर्कुलर, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. व्हाट टू पॉसिबिलिटीज? If the current is anti-clockwise directions, तो anti-clockwise directions में, अब सर्कुलर करंट में जो राइट हैंड थंब रूल में that represent the magnetic field, thumb represent the magnetic field, और curl of the finger represent the current. Now current anti-clockwise, magnetic field outwards, dot. Now in this case current is this curl of the fingers, current clockwise, field inwards. No need to be confused. State, this is the state. Now thumb now here represent the direction of current, curl of the finger magnetic field, outward, upwards, anti-clockwise. If currents डाउनवर्ड्स, यदि आपके पास करंट अपवर्ड्स की बजाय स्ट्रेट वायर पे डाउनवर्ड्स है
तो यह फील्ड लाइन्स एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब आपके पास आता है बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स law. In the Biot-Savart's law, we can take a wire carrying current, and this is the current element. What means current element? The small portion of the wire through which the current is passed. dl, length of the current element. Current element is a vector quantity, and current element that is equal to magnitude of current and the length of the small element. That is the current element. Small portion of the wire through which the current is passed, and the current element is a vector quantity that is equal to magnitude of the current and length of the element, current element. Now we can take a point, observation point, and at that point we have to draw the magnetic field. इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. It's okay, we have to determine current outwards है, magnetic field inwards होगा, outwards magnetic field inwards. Now this point is R, distance from this point, this is angle theta. P is the observation point where we are to determine, we have to determine the magnetic field. Biot-Savart's law statement is what? It states that the magnitude of the current that is proportional to magnitude of magnetic field that is proportional to the current passed through the wire. Magnitude of current, magnitude of magnetic field that is proportional to dl, length of the current element, or magnitude of magnetic field that is proportional to sin theta, or magnitude of magnetic field that is inversely proportional to square of distance from current element to the observation point where we are going to calculate the magnetic field. And combining these above equations, we can write dB is proportional to I dl sin theta upon r square, and dB is equal to what now here? dB is equal to k I dl sin theta r square. K is the proportionality constant that can be written as mu naught by 4 pi. Magnetic permeability, magnetic permeability, mu naught, magnetic permeability, ये परमिट करते हैं फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, ये आपके पास टेस्ला पर एम्पियर, टेस्ला पर एम्पियर, एंड वी कैन से मीटर. म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एंड हियर dB is equal to mu naught 4 pi, यहाँ पे dB mu naught 4 pi I dl sin theta upon r square. मैग्नीट्यूड फॉर्म में है बायोट-सावर्ट्स लॉ. द बायोट-सावर्ट्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. We can write in vector form. How we can write in vector form? dB vector mu naught 4 pi I dl sin theta r square, r unit vector. Here unit vector represent the direction of magnetic field. Student, can we write this formula? Mu naught I dl vector r vector upon 4 pi r cube. If you solve
तो दैट बिकम्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आएगा आपके पास कि dl r sin थीटा, r यूनिट वेक्टर, और r से r कैंसिल हो जाएगा, वही r क्यूब बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। वाइट-स्वेट्स लॉ पे कंसर्न हमारे पास 3 एप्लीकेशंस आती है। फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular coil carrying current at its center. The magnetic, first application, magnetic field at the center of circular coil carrying current. Okay, we can take a circular coil. This one is circular coil carrying current, and this one is the center where we have to determine the magnetic field. Suppose choose a current element, small portion of the wire AB. This one is DL. This is the observation point center. This one is R, this one is 90. Now the first point is that here current is clockwise directions. Circular current hai, we apply the right hand thumb rule. When the current is circular in anti-clockwise, in clockwise, manifold inverse, or inverse manifold is denoted by the cross. Outwards dot, inwards cross. Using the Biot-Savart's law. Now in the Biot-Savart's law, dB is equal to mu naught I dl sin theta upon 4 pi r square. dl और r, यहाँ पे dl is perpendicular to r, that means here theta is 90. We are saying that theta 90, mu naught I dl sin 90 4 pi r square. Sin 90 means 1 और dB is equal to mu naught I dl 4 pi r square. Now integrate 0 to L, length of circular wire. ये dB is equal to mu naught I dl का integrations L upon 4 pi r square. This is the general formula. Magnetic field B is equal to mu naught I L upon 4 pi r square. It's okay. Special case is what? Special case. Special cases. First, if the wire is circular, if the wire is circular carrying current, तो L is equal to what? 2 pi r. So manifold mu naught I into my 2 pi r upon 4 pi r square and mu naught I upon 2r if the wire is circular. So if the wire is circular, the manifold at the center of the circular wire carrying current mu naught I upon 2r. This is the first special case. Second special case is that if the wire is semicircular, if the wire is semicircular, तो L is equal to pi r और मैग्नेटिक फील्ड होगा mu naught I into में pi r upon 4 pi r square और mu naught I upon 4r for semicircular. If the wire is any segment, यानी ऐसा सेगमेंट जो neither circular nor semicircular, I mean say that such type of, then what we can do in this case?
This one is R, this one is L, और ये theta. Now manifold at that point will be what? In this case, B is equal to mu naught I L upon 4 pi R square. Theta L upon R upon length. तो L R theta. In such case, mu naught I theta upon 4 pi R. When we put the value of R, this one is the magnetic field. In what case? Any segment, that such type of segment that can't indicate the circular and semicircular. We can solve the numericals. And one more numerical is what? If you have given a wire carrying current, this is the wire carrying current. Numerical is that when we bend this wire in the form of circular loop, one circular loop, then its manifold at the center is P. Okay. If we made this same wire, same length wire, the N loop, what will the manifold at the center? For one loop के लिए we can say B is equal to mu naught I upon 2R. Manifold at the center, and here L is 2 pi R and R is L upon 2 pi, and we can write B is equal to mu naught I 2 R L upon 2 pi and mu naught I pi by L. Equation first. When it is bent in this form and one loop, then manifold is this mu naught I pi upon L. When there will be N loop, for N loop, so magnetic field now mu naught N I upon 2 R dash. Now here length L dash, L is equal to N into 2 pi R dash, or R dash L upon N 2 pi, or B dash is equal to mu naught N I 2 R dash. R dash is what? L upon N 2 pi, and B dash is equal to mu naught N I upon 2 R dash की वैल्यू पुट कर दो L N 2 pi. That is mu naught N square I pi by L. B dash mu naught I pi by L, that is B, for N square times of B point to be noted. The most important problem. And one more numericals. If you have given a wire such that this segment, a current carrying, this one is 120. Now what will be the magnetic field? So now in this, for any segment, mu naught I theta upon 4 pi R. R will be given, this one will be same. Now theta is what? 120. We can write 120 को. Of theta 120 को we can write 2 pi by 3. It's okay. So what will the manifold? Now we have put the value of 2 pi by 3 radian. So today we have discussed magnetic effect of current. In magnetic effect of current में हमने सबसे पहले आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Electromagnetism, the branch of physics which deals with the study of magnetisms due to electric current and moving charge. Oersted
discovered the magnetic field, and according to Oersted, a current carrying conductor wire produced the magnetic field around it. And in his first experiment, he is discovered by the magnetic field by showing the deflection of the needle. When we place a magnetic needle below the current carrying wire, then the magnetic needle shows the deflection. When we reverse the directions in the wire, the directions of the needle is also changed. That means something is surrounding the wire, and you find the main 3 point discuss. We have already discussed. First is what? When a magnet is at rest, it produces the magnetic field. When the electric charge is at rest, it produces electric field. But the main point is that a current carrying conductor always produces the magnetic field, not electric field. But a moving charge with uniform velocity can produce electric field as well as magnetic field. और उसने अपने पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में ये डिस्कस किया कि नो पोल प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर, बट इट शोज पोलरिटीज. पोलरिटी शो करेंगे बट पोल शो नहीं करेंगे. फिर हमने आपको बायट-सावर्ट्स लॉ पढ़ाया, डायरेक्शन ऑफ करंट बाय राइट हैंड थंब रूल, स्टेट करंट में, सर्कुलर करंट में. ओके, स्टेट करंट में द थंब रिप्रेजेंट्स द करंट, कर्ल्स ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और सर्कुलर में दिस रिप्रेजेंट द करंट एंड दिस थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमने अपने बायट-सावर्ट्स लॉ की वन एप्लीकेशन डिस्कस की है, स्टेट वायर कैरिंग, सर्कुलर वायर कैरिंग करंट. अब अच्छे से पढ़ेंगे. एंड टुमारो वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely and finitely straight wire and magnetic field at the axis of the circular coil.